कुठे गेला तू? Circle it. Circle. ये ले निकाल दिया शील्ड। चलेगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। नहीं तो बोला क्यों है? निकलता तो भी चलता था। तू बोला कैसे मेरे को? हिम्मत कैसे हुई तेरी? काट डालूंगा तेरे को। फिर ट्यूनिंग क्या रहता है? हाँ? एल्डन एल्डन रिंग एल्डन रिंग। किधर गए थे तुम लोग? तुम लोग तो भाग गए। मैंने अपना ब्लेड +7 कर दिया। +7? सिर्फ +7? Who are you? Oh, now. किसी को स्पिरिट बढ़ाना है, उसको इवॉल्व करना है, अपग्रेड करना है तो कर लो यहाँ से। किधर गए? राउंड टेबल पे एक लड़की आई है फायर प्लेस के स्पिरिट पास। यूज ही नहीं करेंगे तो क्या फायदा? करके रख ले, जिधर ज़्यादा टीडियस टास्क करेगा उधर डाल देंगे। अच्छा, तू पण घेतली ती शील्ड? तो बदल पाहिजे तर फास्ट बिल्ड मध्ये. असं म्हणतो. तुला खेळायचं असेल तर मग मी बदलतो. मला स्टॅट्स चेंज करायची जास्त गरज नाही.
चालेल मी कटानावाली बिल्ड जातो नागा की ये गोवाली फिंगर सील बंद हो गए और अरे टू इधर नहीं फिंगर्स चलेंगे ना नो नो फिंगर सील नहीं माय बैड टू फिंगर्स हाँ वो तो कब के बंद हो गए तो लास्ट टाइम से बंद ही है यहाँ पर रिमेम्बरेंस है टू फिंगर का मेरा पास रिवेंज नहीं है इसका मैं अपग्रेड नहीं कर पाया था तो करना वो भी पड़ेगा नहीं चालू आएगा नहीं हो रहा है मेरे पास रिवेंज नहीं है बस फास्ट बिल्ड करायची आहे ना That define. It's how you bounce back. Reach your impossible. Lenovo Legion. As we all know, in Elden Ring there is a whole plethora of weapons and items you can use to create all sorts of crazy builds at HP. So if you're excited to see this extremely broken build, make sure you hit that like button down below, and if you're new around here and you want to stay up to date with all of the Elden Ring content, make sure that you're subscribed, and that way you'll never miss a future video. But with that said, let me show you this crazy tank build. Now, as you can see on screen, this is in fact the entire build, and I know you're probably thinking that this is an extremely heavy build to use, but even with all of this gear equipped, we are still in a medium weight class, and just like the rest of the builds on this channel, this character is only level 150. In fact, I'm just going to throw up the stats on screen for you, and as you can probably expect from a tank build, most of our points are going into both vigor and endurance. But just to obviously quickly go through them, we've got 60 points in vigor, 24 points in mind, 50 points in endurance, 22 points in strength, 15 in dexterity, and then 38 points in faith. I haven't touched arcane or intelligence, and they're at 10 because the beginning class for this build is the wretch class, so every single stat starts off at 10. Like I mentioned a moment ago, our main focus is of course delving as many points as we can into health. शायद किसका तो क्या होती है इसको दूसरी कटाना देना ह्या वेपनचं ॲश ऑफ वॉर वापरायला तुला शिल्ड स्वॉप करायला राहायला लागणार तसं बिल्ड ठेव एक फिंगर शिल्ड ठेव शिल्ड बरोबर मी शॉवर लावलेला त्या गाडीत होतो कशाला लावलेला शिल्ड वरचा ॲश ऑफ वॉर असेल ना तो पण कीनच करून ठेव जर तुला 100% HP रिडक्शन हवे असेल As well as endurance to ensure that we have the lowest health bar available to us, and the ability to equip the best armor. Now the reason why the HP is only 60 and no more is because 60 is actually the soft cap in the vigor stat, because the amount of HP that you get from going from level 50 to level 60 is 196 extra HP, but if we were to then go from 60 to 70, we'd only be getting an extra 59 points. So it's beneficial to stay at 60 for your vigor and then have 50 endurance, because with the talismans
ones that I'll talk about in a moment, that will give us enough equipment load to use all of the items in this build whilst keeping ourselves in the medium weight class. And then obviously for all of you keen-eyed viewers out there, you would have seen that I've got the Blasphemous Blade equipped, hence why we've got 22 points in strength, 15 in dexterity, and then 38 points in faith. The strength and dexterity are the minimum requirements for the Blasphemous Blade, and I'm sure for those of you that have used this weapon before, you know why we're pumping everything into faith, because we're going to abuse the absolute hell out of the Taker's Flame, and it purely scales with faith. So that is why all of our points are essentially pumped into faith. And again, with our endurance so high, that allows us to use the best armor in the game, which is the Bull Goat armor. And for those of you that maybe don't know how to obtain this, all you need to do is complete the majority of Patch's questline. Essentially, one of the final steps is to invade the NPC that has this armor, Great Horn Taroth, and upon defeating him, you will then be able to obtain अच्छा मास्क लगाया है इसने अच्छा दिख रहा है Hey all, it's Matt, your average gamer, and for being the Blasphemous Blade being so reliable, even with around 35 रेनाला के पास हाँ 1 मिनट हम हाँ shield to block, let's get into equipment. Charm, Archer's favorite plus tank build where you take on a good armor set. Here we have the Fire Prelate set, but you can use something like the Bull Goat set as well, or even Lionel's set, and we're using Prayerful Strike on the Great Stars. This one can be an absolute beatdown because the poise damage is ridiculous, and as you may already know, Prayerful Strike's going to heal you with each hit, and you have a little bit of additional healing using the Great Stars too. Out of these three, this is absolutely the one I use the most, and yeah, it's a little less reliable than the first one because it's the Blasphemous Blade, and pretty much nothing's going to beat the Blasphemous Blade, right? But this one is more fun on the list, but this one's a lot of fun too, and it works with Blood Tax because Blood Tax can heal back some HP, and then you can combine something like Blessing Spoon or Blessings of the Erdtree to get a lot of HP regen. So yeah, this one can be a little bit challenging to use, but at least you get to use a blood build with a tank build, so it's kind of unique in that way, in the sense that you're healing back HP, you can build up and proc some bleed, as well as also having decent defense and decent armor too. Blood Tax is... Hey all, with Scott. We do take a hit there because certain attacks will knock you back farther. For this video, we just took on a couple different side bosses, showcasing 3 different builds. Out of the 3, this is probably the easiest to run because you have so much defense and the reliability of the Blasphemous Blade, but on this list, when I show the second one, that ends up being my favorite one, and probably the one I've used the most lately. That being said, this one is kind of easy mode. Yeah, between the Blasphemous Blade being so reliable, even with around 35 or 40 faith or whatever we have here, getting decent fire damage, and then Scholar Shield on the Fingerprint Shield, we're taking less stamina damage drinker. For that, you're going to use as well as Elemental Resistance, and then you can use the Blasphemous Blade to heal. For that, you're probably going to want to fill up your FP, Golden Vow and Blessing Spoon. After that, you're probably going to want to fill up your FP because Flame Grant Me Strength is pretty short acting. Then we're going to use Flame Grant Me Strength. And after that, we're going to take out the Fingerprint Shield. I hit the wrong button there. We're going to use Scholar Shield. That'll give us more stamina resistance as well as elemental resistance. And then you can use the Blasphemous Blade to heal back any damage you do take, and the Fingerprint Shield to block. Let's get into equipment. For equipment, we have the Blasphemous Blade plus 10, the Demi-Human Staff. We have the Fingerprint Shield with Scholar's Shield. Any seal will do for buffs. You can check out the armor set. Shard of Alexander, Great Jar's Arsenal, Fire Scorpion Charm, Archer's Favorite plus 2, Fire Tier, Faith Tier. Let's talk about stats. And for stats, we have 55 Vigor, which is basically 60 Vigor with Archer's Favorite plus 2. You can use Morgott or Radahn's Great Rune, by the way, to make this even better. We have 25 Mind, 40 in... what? Okay. Are you winning, son? Yeah. इधर कौन मारा अच्छा ये मारे क्या है इधर वो तो बोल रहा था रिमेम्बरेंस का वो नहीं ये कुछ और टेबल पे बैठा था वो मर गया
कौन मारा? कुछ तो इन्वेस्टिगेशन रैंडम करो, शीट हो रहा है भाई। मर्डर इन्वेस्टिगेशन करो। डिटेक्टिव कॉनन को बुलाना पड़ेगा अभी। कुछ तो मिला इसके पास से, वो भी नहीं पता क्या मिला। कुछ दिखाई नहीं। देखो चुटकुलो दिख रहा है क्या? चुटकुलो एकदम। देखना। जैसे अंडरलॉर्ड, 3 अंडरलॉर्ड स्पॉन किया मैं। और इधर कैसा स्पॉन कर रहा है? पता नहीं, इधर आ रहा है मेरे को स्पॉन करने। और 3 अंडरलॉर्ड स्पॉन हुए। endurance on this list, and that is the Bethune, by the way, to basically state tier for HR's arsenal, the shield. For equipment, we have the blast तेरे any को कैसे damage ये you करने do आ रहा है? take, and the fingerprint shield to अच्छा block. हाँ रे, Let's get into equipment. For equipment, ये we कौन सा फ्लेम है? have the blast नॉर्मल blade फ्लेम। plus 10, the demo तेरा human लाल क्यों है? staff. We have फ्लेम the वाला तो है fingerprint ही नहीं shield with मेरे पास। scholar's shield. Any seal will do for buffs. Check out the इनकैंटेशन armor ही set, नहीं है। Shard of Alexander. ये तो जल्दी से खत्म हो जाता है ब्लैक फ्लेम वाला। ये देख खत्म भी हो गया। Great Jar's arsenal, Fire Scorpion मैं charge. गोल्डन ऑर्डर का लगाता हूँ। ये अभी खत्म हो जाएगा। His favorite plus out the armor. Humans, fingerprint shield to block. Let's get into the blasphemous blade to heal back Valorant any का गन damage you लगता do है तेरे take, को। and the fingerprint shield. चले क्या इधर से? अभी इधर 2 घंटा नहीं बिताएंगे। इधर ही 2 घंटा मैन, व्हाट द फक। तू काय करतोय तू एवढा वेळ? इसमें भी ये शील्ड क्यों लिया है? वो टैंक बन रहा है अभी। अच्छा। वेपन ऑफ चॉइस गलत है उसका। ये मेरे सबमरीन के पीछे, इधर तो पीछे से दरवाजे ये से क्या चल रहा है मतलब? अटक गया। भाई टाइम बस, फुल टाइम बस। Shield to block. Let's get into equipment. For equipment, we have the blasphemous blade plus 10, the demi-human staff. We have the fingerprint shield with scholar's shield. Any seal will do for buffs. You check out the armor set, Shard of Alexander, Great Jar's arsenal, Fire Scorpion. मैलिकेट के पास क्यों जाने हैं भाई? रेनाला ये के है पास जाने हैं ना। अरे किधर लेके जा रहा है? वाला। What are you doing bro? बंटी और बबली, बंटी और बबली। करो भाई तुम लोग को। I don't want to reaper। मेरे को टेस्ट करना है। बाहर का रास्ता किधर है? मेरे को कैनन टेस्ट करना है। अच्छा है मोठा वाला कटाना स्ट्रेंथ नहीं होता स्केल। भाई इसके लिए बुलेट कहाँ से लाऊं? कैनन के लिए इट्स
स्ट्रेंथ कमी केलं तर डिफेन्स कमी होतं. झालं माझं. काय करायचं? Okay. कसा दिसतो बघ. ढोल्या. इधर भी कुछ तो गिरा है. तो कुछ भी नहीं. It the soft kept cat. Sorcery build. We will call this Twenty 50 80. Is it thy way? Now. तो टाइप करने का ऑप्शन देते हैं. चलो. इधर काय वोट केलंय? क्वीन चेंबर वोट केलंय. काय वोट केलंय ना? ते शॉर्टकट वापरून कर ना टीपी आरबी वाला. तेच वापरतोय पण चुकीच्या ठिकाणी येतंय ते. हा तिथेच आहे. ओके तिथेच क्वीन्स केलंय मग मी केलं वोट. वोट रिजेक्टेड दाखवतं डायरेक्ट. का? क्वीन्स बेड चेंबरच करतोय ना वोट. मग तिथे जातच नाही माझा वोट. दिस डेस्टिनेशन इज नॉट करंटली बिंग वोटेड ऑन दाखवतं मग. What? बंद करून आलो परत. टीसी का केलं?
बंद करून येतो परत काहीतरी एरर येते. फिक्स होतं मग. तुम्ही लोकांनी टीव्ही पण नाही केलं तोपर्यंत. How can we leave our friend back? आता आला 6 बहुत seconds. बरोबर. मेरे पे एकदम से एनिमी आया. एकदम 6 से seconds एनिमी आया. बैठ रहा हूँ मैं. है. माफ कर दे. What? ये गॉडफ्री से लड़ने जा रहे हैं ना? Yes. अंदर तो गॉडफ्री जिंदा क्यों नहीं है? इधर हाँ ग्रेस नहीं है क्यों है? नहीं. तो आओ इधर टीपी करना पड़ेगा उस दिन जैसा हुआ. किधर? मिट्टी भी नहीं रहेगा मतलब. हाँ माय बट गलत जगह में डाला. माय बट. नहीं मिट्टी भी नहीं है. दिख नहीं रहा. ये वापस आना. वो मैं गलती से गलत कर. तो कर सकता है वापस बाद में. Okay. ऑप्शन होते हैं. अभी मिट्टी कौन सा? आएगा. अभी वापस चलो वहाँ पे. मिट्टी के लिए इतना रहना दो ना. अभी भी दिख रहा है मेरे को ग्रेस इधर. मिट्टी मिट्टी है मिट्टी तू मिट्टी. तू उधर पहले वो तेरा उससे वो अलाइव करना. मैं अभी डेड हो गया रहेगा. नहीं डेड होने को मारा ही नहीं है. देख तो ले. क्या पता कुछ गलती हो गया. मैंने नहीं लगाया चीट इंजन. आओ चालू कर दे. कितना टाइम लगता है? टीपी तो करो वहाँ पे. कहाँ करने ठीक? रुका हूँ मैं उसके लिए. मैंने तो कर दिया कब का. एस्ट्रैक्स रुका था कब से. अभी देख. What? दिसतं तर आहे. मला नाही दिसत दिसत आहे पाहिजे ना किलो. ग्रेस. ग्रेस. मिट्टी है क्या? मिट्टी है. किधर आहे. नहीं. लेफ्ट साइड में तो कहीं मिट्टी नहीं दिख रहा है. मग त्याच्यात जाऊन परत चालू करता येते का बघ. मेलिकेट को तो हम लोग ने मार दिया ना. हम्म.
अलाइव तो दिख रहा है. क्रम्बलिंग लैंड्स ऑफ अजुला. मेलिकेट डेड भी दिख रहा है. चेंज उसी टुगेदर खेलो, चलो चलो लेट्स गो. नो बहुत तत खेला है. बसलो आम्ही. थिएटर बेट करतो. त्या चॅनल मध्ये टाकायचं, त्या चॅनल मध्ये सांगतो की नका करू डाउनलोड. त्याने चुकून एल्डन रिंग मध्ये टाकलं. हा, आणि नंतर एल्डन रिंग मध्ये बघतोय मी कोऑप चेंज टुगेदर. आय एम लाईक व्हॉट. अच्छा ते पुढची लिंक मी तिकडे टाकली मी का? केलं डिलीट केलं मी. हम्म. मला तर बीटी झाला भाई. कोण ट्रोल करत होता? बीटी झाला. तो पुरा बघू पेज शकतो दुखत आहे. 2दा स्ट्रीम वरती आम्ही केवढा वरती पोहोचलोय. इव्हानचा कॉस्प्ले कोणी केला? कमेंट. का म्हणजे तुमच्याच तिघांमधला आहे कोणतरी? अलाइव. डिक्टेटर फाइंड मी. तुम लोग दोनों लीव करो. खान. तू भी ये सेशन रिस्टार्ट दे देना. मतलब तेरा वाला सेशन ऐसे तो ग्लिच रहेगा तो रिस्टार्ट पे उसने निकल जाएगा. विथड्रॉ कर दिया उसने विथड्रॉ. मला एल्डन थ्रोन दिसते बिहाइंड यू वॉट द. लास्ट टाइम मैं एशियन कैपिटल में आया था तो इमिट प्रेपर नाउ में एंटर द एड 3. हम लोग ने मालिकेट को हैक किया, आया पे. उसके वजह से हुआ क्या? काय केलं आपण? मालिकेतला हॅक करून सारखं मारून. चल परत मा मारू मग. माझ्यामध्ये पण झालेलं. बट मी ते ॲशन कॅपिटलला TP केलं ना, तर मग ते सॉल्व्ह झालं लगेच. Fully charged battery, fully charged. फुली चार्ज बॅटरी फुली चार्ज.